Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is very interesting topic, sinusitis, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में अंदरूनी नाक की सोजिश भी बोलते हैं. What is sinusitis? Sinusitis is inflammation or swelling of the tissue lining the sinuses. ये एक किस्म की इसको हम अंदरूनी नाक की इन्फ्लेमेशन या सूजिश भी बोलते हैं. हमारे हेड रीजन में 4 साइनसेस हैं. उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो कि वो ड्रेन होता है हमारे नोज को. The sinuses are 4 fair cavity spaces in the head. They are connected by narrow channels, जो बहुत ही बारीक चैनल्स से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. These sinuses make the mucus they drain off the channel of the nose. This drainage helps keeps the nose clean and free of bacteria. यही जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस को किल करती है और हमारे नाक को ये क्लीन रखती है. और जो नाक की अंदरूनी हिस्सा है जो कि एपिथेलियल सेल्स से बना होता है, उसमें ये प्रोड्यूस होता है और उसी सेल्स को ये वेट रखता है जो बैक्टीरिया इसकी वजह से किल होता है. An acute inflammatory process involving one or more of the paranasal sinuses. Maxillary and ethmoid sinuses are most frequently involved. जो साइनसेस इसी ड्रेनेज में इन्वॉल्व है जो हमारे हेड रीजन में, जैसा कि आप देख सकते हैं इसी स्लाइड में कि साइनोसाइटिस सिम्टम्स on the left side, these sinuses shows that this person is healthy, and on the right side that these sinuses shows that this is the sign of sinusitis. There are 4 types of sinuses, like the frontal sinuses, sphenoid sinuses, ethmoid sinuses, maxillary sinuses, and on the right side you see that this is the infected sinusitis. Mucus and the sinusitis infection, and on the downside you see that this is the inflamed sinus lining, and the right side upside you see that this is the mucus and sinuses infection. Due to infection there are production of mucus will occur, and there are certain symptoms of these sinusitis, like the nasal mucus, plugged nose, facial pain, fever and headache. These are the main symptoms of sinusitis. Like इसके ये साइंस है, जिस बंदे को साइनोसाइटिस होता है उसकी नाक बहती है, मतलब नाक से एक म्यूकस प्रोड्यूस होता है. और इसके अलावा सेकंड वन इज द प्लग्ड नोज. कुछ बंदे ये महसूस करते हैं कि हमारी नाक बंद है, प्लग्ड नोज. एंड द फेशियल पेन, फेस रीजन पे वो बंदा सिवियर पेन फील करता है. इसके साथ साथ हेडेक और फीवर भी हो सकता है. एंड नाउ दिस इज द हाउ डज साइनोसाइटिस डेवलप, कि किस तरह ये साइनोसाइटिस डेवलप होता है, बंदे को इन्फेक्ट करता है. यूजुअली इट फॉलोज rhinitis which may be viral or allergy. This is also, rhinitis shows that this is also the inflammation of the internal lining of the nose, inflammation. And inflammation and edema of the mucous membrane lining the sinuses cause obstruction. इसी इन्फ्लेमेशन और एडीमा की वजह से इसी मेम्ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है. This provides for an opportunistic bacterial invasions, like some certain types of bacteria like our normal flora will become the opportunistic pathogens. ये मतलब हर जगह हमारे बॉडी की हर जगह की अपनी नॉर्मल फ्लोरा है.
तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी पे। नॉर्मल फ्लोरा होता है, नोज़ का अपना नॉर्मल फ्लोरा है, कान का अपना नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे माउथ का अपना नॉर्मल फ्लोरा होता है, और हर जगह जैसे कि बगल का अपना नॉर्मल फ्लोरा होता है। तो ये इट बिकम अपॉर्चुनिस्टिक एंड काज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। Predisposing factors like allergies, nasal deformities, cystic fibrosis, nasal polyps, and HIV infections. These are the predisposing factors. Like cold weather nowadays, like in December, very cold weather, we have to care about it and take the good food like the boiled eggs and high pollen counts, smoking in home, reinfection from siblings. Acute and chronic sinusitis. This is the two main types, like acute and chronic sinusitis. Acute sinusitis respiratory symptoms last longer than 10 days, but less than 30 days. And between like this acute and chronic sinusitis, like subacute sinusitis, in which the respiratory symptom persists longer than 30 days. And in the chronic sinusitis, the respiratory symptoms last longer than 120 days. Etiology of sinusitis: about 70% of bacterial sinusitis is caused by the Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, and other causative organisms like the Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. These are some types of bacteria. ये कुछ बैक्टीरिया जो कि about 70% बैक्टीरियल साइनोसाइटिस इसी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ये नाम बोले मैंने, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, इसको हम पर लैब में डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये साइनोसाइटिस काज हुआ है। तो फिर उसकी हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि ये विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विल इफेक्ट यू अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द साइनोसाइटिस लाइक द पेरिऑर्बिटल एडिमा, सेलुलाइटिस एंड nasal mucosa is red or swollen. Like the tenderness or signs, nasal discharge takes some time, yellow or green, and post nasal discharge in the posterior pharynx. ये कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है साइनोसाइटिस के इसमें सेलुलाइटिस होता है, नेज़ल म्यूकोसा, नेज़ल साइड बिकम रेड हो जाती है। इसके अलावा ये नेज़ल डिस्चार्ज जो होता है हमारे नोज से, तो वो थिक होता है और सम टाइम इट बिकम येलो और ग्रीन। तो ये इट बिकम ग्रीन और येलो in color, and post-nasal discharge in the posterior pharynx. There are certain types of diagnostic tests available for the diagnosis of the sinusitis, like the nasal endoscopy. A good technique, a thin flexible tube endoscope with a fiber optic light inserted through your nose allows your doctor to visually inspect the inside of your sinuses. दिस आल्सो इज़ नोन एज रेनोस्कोपी। इसको हम रेनोस्कोपी भी बोल सकते हैं कि ये एक ट्यूब को हमारे नोस्ट्रल के ज़रिए एंटर करते हैं, फिर उससे डॉक्टर विजुअली ये देख सकते हैं। In other types of diagnosis which are available for the sinusitis, like the CT scan and MRI, and computerized tomography or magnetic resonance imaging, इसकी वजह से भी हम ये देख सकते हैं कि sinusitis देख सकते हैं। They may identify a deep inflammation or physical obstruction that difficult to detect using an endoscopy. इससे बहुत बारीक like MRI, a good technique, good imaging studies, इससे हमें ये पता चल सकता है कि किस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ है और किस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड नेज़ल एंड साइनोसिस कल्चर्स, इसके अलावा हम इसकी जो नोस से जो ड्रेनेज होती है उससे सैंपल लेके हम इसको कल्चर भी कर सकते हैं लैब में। माइक्रोबायोलॉजिस्ट विल कल्चर इट, एंड आफ्टर दिस द
that will be check the sensitivity of the antibiotics against that certain types of bacteria. जो बैक्टीरिया आइसोलेट हो जाता है तो उसके बाद इसकी हम ससेप्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल प्लान ऑफ केयर एंटीमाइक्रोबियल ट्रीट फॉर 10 to 14 डेज। इसका मतलब ये 10 to 14 डेज ये एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, लाइक द एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, कोडाइन एंड एमॉक्सिसिलिन like the 20 to 40 mg per kg per day in 3 divided doses, and augmentin have 25 to 45 mg per kg per day in 2 divided doses. इसके साथ साथ हम कोडेन देते हैं फॉर द सिवियर पेन। OTC medication like the acetaminophen or the ibuprofen to relieve the pain, मतलब जो पेशेंट पेन फील करता है उसको कम करने के लिए हम ये ब्रोफेन वगैरह दे सकते हैं, डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं और एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लाइक इफ़ वी अप्लाई दिस नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट to a certain level, it will be very good in the winter, like humidifier to relieve the drying of the mucous membrane associated with mouth breathing, and increase oral fluid intake, saline irrigation of the nostrils, and moist heat or affected sinuses. Thank you for watching this video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you very much.